Good morning, dear students. I hope you all are very fine today. So, let us continue with our new lesson, that is the soil. Yes. So, every one of you is very well aware about the soil. So, basically, what is soil? Okay, and let us see. So, soil is one of the very important natural resources. You know, all the natural resources, all the things which are found in nature, which naturally occur, are all called as the natural resources, right? So soil is one of the natural resources. Now, what is the importance of soil? That it provides encouragement to the plant, right? The plant, it holds to the soil, and hence it can be upright, right? And hence it can grow. And also the soil, it provides the water, minerals, right, to the plant for the growth, which is very important, which is very necessary for the soil, for the plant, for its growth, right? And also, if you see, soil, that is the home for many organism. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, देन इवन माउस आर देयर, सो और द रैट्स आर देयर. सो देयर आर सो मेनी of the organisms which live in the soil. They need soil for living, and that is their habitat. So plant gives habitat to, of course, plant, and also it is a habitat for many of the organisms. So it, and we have seen that it provides the water and mineral to the plant. फिर plant उसके हिसाब with the help of this water and mineral, it will make its food, it will do photosynthesis, and yes, it will provide food to us, that is to all the to all the animals. And hence soil is a very very important part of our lives, indirectly though, but it is very important part of our lives. Then soil teeming with a life. So let us see how the soil and a life are correlated. So what you need to do, just try to collect some samples of the soil. Okay, different अलग अलग जगह से you have to collect various types of the soil. Like you collected the soil from garden, you may get the soil from, suppose, roadside, or you may get it from the area where construction is going on, or from a farm, or near a sea, or near a river. So you can collect various types of soil as much you can get. Okay, then what you need to do, you need to, after collecting that soil, you need to fill this table which is given. You want to see, अगर आपने गार्डन की सॉइल ली है, तो यू हैव टू जस्ट नोट डाउन कि उस वहाँ पे गार्डन में कौन से प्लांट्स आए हैं इन दैट सॉइल, which kind of plants grow in that specific soil, then which kinds of animals are seen over there, like ants होंगे, snakes होंगे, या फिर जो भी है rats वगैरह, then what kinds of earthworm would also be there. So how many, which animals are staying in that sand, that you have to note down. or if any other observation, वो sand कैसी है, उसमें वाटर कितना होल्ड हुआ है, एंड वॉट एवर यू कैन ऑब्जर्व, दैट ऑल द अदर ऑब्जर्वेशंस ऑल्सो यू कैन नोट डाउन. सो वेरियस सॉइल के सैम्पल्स आपने कलेक्ट कर लिए, एंड उस वेरियस सैम्पल्स में, इन द डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ सॉइल, व्हाट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन, व्हाट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर सीन ओवर देयर, एंड व्हाट अदर प्रॉपर्टीज दे हैव दैट स्पेसिफिक सॉइल हैज़, that all you need to note down, and you will get the difference. Definitely and surely you will get the difference in that. So from this, what we conclude is, there is the effect of some substances on the soil, or we can say the substances which are found in soil will depend on the type of soil, so they are interrelated. So let us see. If you have seen, जो पॉलीथीन बैग्स होती है, जो प्लास्टिक होते हैं, that if they are thrown directly like that in the soil, then they will pollute the soil. You must be knowing soil erosion or the pollution of soil. Okay, that is caused by the polythene bags or by the plastics. ये polythene bag और plastics जो है, वो अगर soil में हो, they may also kill the microorganisms which are living in the soil. And you know how important the microorganisms are. Microorganisms जो होते हैं soil में, वो क्या करते हैं, organic substances का decomposition करते हैं, so that there is no organic waste, और उसको humus में convert करते हैं, manure में convert करते हैं, and that is further useful. So it is very important. Microorganisms in the soil are very very important for us and for the environment, and hence, but this plastics and polythene bags जो होते हैं, they kill these microorganisms, and hence
there is demand to ban the polythene bags and the plastics, okay, but still we are using it. So we should try to avoid the use of polythene bags or plastics, and in case if we are using, उसको properly dispose करो, okay. Then also the other substances में pollute the soil, जैसे कि chemicals होते हैं, कुछ products अलग products होते हैं, pesticides होते हैं, weedicides होते हैं जो हम agricultural field में use करते हैं, they also pollute the soil. If we go on continuously using the fertilizers, the pesticides in the farm area, then yes, that will pollute the soil. वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एंड केमिकल्स, तो ये जो केमिकल्स है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है विच आर जस्ट गिवन आउट फ्रॉम द हाउस होल्ड वर्क, डोमेस्टिक और फ्रॉम द इन फैक्ट्रीज एंड ऑल, तो उसको पहले हमको ट्रीट करना चाहिए. वी शुड डू द ट्रीटमेंट ऑफ दैट एंड देन वी कैन सेंड इट or we can just simply release it into the soil. And of course the use of pesticides जो है, chemical fertilizers, and that should be minimized to avoid the pollution of soil by that. Now let us see what is a soil profile. तो बेसिकली व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, अगर आप देखोगे, अगर आपने देखा होगा लाइक इन द वेरियस जब अब कुछ डिग हो रहा है, when the soil is getting digged, you can see there are different layers of soil. So if you want to study that layers of soil, we have to just by a simple activity we can understand that. What we need to do, we have to just take a little amount of soil, थोड़ी सी soil लेनी है. If it is a lump, you have to break the lump, okay, and make it a powder. We can just break the lump with hand also and we can make the powder of that. फिर उसको क्या करना है हमको, वी हैव टू टेक अ ग्लास टम्बलर और उसमें 3/4 वी हैव टू फिल द वाटर, 3/4 ऑफ द ग्लास टम्बलर शुड बी फिल्ड विद वाटर, और उसमें वो सॉइल जो हमने पाउडर की फॉर्म में बनाई है दैट वी नीड टू जस्ट पुट इनटू दैट, और उसको क्या करना है, स्टर करना है. अगर हम उसको स्टर करेंगे तो व्हाट डू वी सी, वी विल सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स. तो वो जो पूरा वाटर है उसमें जो सॉइल हमने डाली है, यू वुड सी दैट देयर डिफरेंट लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स आर फॉर्म. कुछ पार्टिकल्स लाइट वेट होंगे, सो दे विल बी अप, दे विल बी फ्लोटिंग अबाउट द सर्फेस. कुछ जो होंगे थोड़े हेवी होंगे, वो सेटल होंगे, और कुछ बाकी के जो होंगे वो वहीं पे रैंडमली दे विल मूव इन द वाटर, दे विल नॉट सेटल एंड दे विल नॉट बी ऑन द सर्फेस. सो व्हाट डू यू सी, देयर विल बी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. इट विल बी लाइक दिस, you can see it in the diagram. So you would see different layers of the soil which are formed in that water which we have taken in a glass tumbler. So अभी वो लेयर्स क्या है, सबसे ऊपर का जो लेयर है ना, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, सबसे ऊपर वाला लेयर. व्हाट डज दिस ह्यूमस कंटेन, इट कंटेन्स ऑल द डेड मैटर, सब ऑर्गेनिक मैटर, जैसे लीव्स है, रूट है, फ्लावर वगैरह है, या फिर जो भी ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, द रोटिंग डेड मैटर जो होता है, तो वो सब जो वेजिटेबल मैटर है, एनिमल वेस्ट वगैरह, वो सब you would see in the top layer that is called as the humus, okay. So you know how the soil is formed, you have learnt it. So the soil is formed by the breakdown of rocks, right? Rock break होते हैं with the action of wind, water or climate, and the rock will break and that will form the soil, that will break into small pieces, into small particle, and that is what will make a soil. So this process is called as weathering. This process is called weathering. The soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate, and this process is called as the weathering. एंड द नेचर ऑफ एनी सॉइल विल ऑफ कोर्स डिपेंड, कि वो सॉइल कैसी है, वो किस पे डिपेंड करेगा, कि वो कौन से रॉक से बनी है. अभी ये तो क्लियर है कि सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम अ रॉक, ठीक है. तो सॉइल कैसी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉइल, दैट विल ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन द रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म, ओके, दैट इज वेरी ऑब्वियस. तो if you see the vertical section of the soil, then through the different layers of soil, that is only called as the soil profile, okay, that we will see what is the soil profile. Here also in the diagram you can see वो जो glass tumbler है जिसमें layers बने हैं, that is all called as the soil profile. और each layer it differs of course, each layer will be different, उसकी color अलग होगा, उसकी depth अलग होगी, the chemical composition of each layer will be different, and hence all these layers are called as the horizons. So what are these layers called as the
horizon. So let us see in detail about the soil profile. See, हम soil profile देख सकते हैं कब, जब कोई when someone is digging the soil, or you can also see जब well dig हो रही है, when the a well is going to form, that time also you can see the layers of soil. ऊपर की soil तो we can see, surface of the soil we always see, लेकिन उसके नीचे जो layer है that we can see अगर कुछ digging कम हो रहा है या well बन रही है, या also we can see it on the side of roads जहाँ पे थोड़ा सा एक dig बन गया है, there also we can see. So we can see the soil layer in different ways. फिर वो जो soil के layers होते हैं हमने उनको क्या बोला है, that are called as the horizons. As I said, the different layers of the soil are called as the horizons. As you can see it in the diagram, there are various horizons. The different layers of soils are called as the horizons. और ये जो horizons है, they are divided into various types depending on the chemical composition. क्योंकि हमने देखा soil की हर एक layer एक जैसी नहीं होती है, हर एक layer की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट लेट अस सी द होरिजन. सो द फर्स्ट वन इज ए होरिजन, द वेरी upward horizon, that is the A horizon, the uppermost horizon which is generally dark in color, जो हमको दिखती है surface soil, that is generally dark in color and it is very rich in humus. Of course humus is organic material, it is very rich in the humus and in the minerals. इसीलिए plant can grow, right, उसमें humus है, उसमें minerals है which is needed by the plants and hence the plants can grow over there. तो root जो है वो उसी area में spread होते हैं. Okay, so that type of soil, that layer of soil is very fertile and this layer is generally soft, it is very porous and it can retain more amount of water. As it is porous, so it can retain more amount of water. इसीलिए इस layer को क्या बोलते हैं, top soil. It is called as the top soil or it is called as the A horizon and that is the shelter for many living organisms like worms होते हैं, rodents होते हैं, moles, beetles, ये जो सारे organisms होते हैं ये सभी इसी layer में रहते हैं. The roots of small plants also, of course, they are in the top soil only. They stay embedded in the top soil. Then the next horizon is the B horizon. The next layer, the second layer, which is okay. It has a little bit less amount of humus, but yes, it has a lot of minerals. And this layer is generally hard. It is harder and it is more compact. बहुत ज़्यादा नज़दीक. It is not that porous. So that is the B horizon or the middle layer. It is also called as the middle layer. Then next is the C horizon. उसी के नीचे जो third layer है वो किससे बनी है? It is made up of small lumps of the rocks and it has a cracks, it has crevices and all. So that is the C horizon. And then below C horizon is a bedrock which is very difficult to dig with a spade because it is very hard. The bedrock layer is very hard. It is very what we can say difficult to dig. So these are the horizons of a soil. Now how is the soil formed? Just now I told you जो rocks होते हैं, the weathering of rock will occur which produces small particles of various materials. अभी ये जो materials है वो होंगे sand and it will be clay. What those materials will be? There will be sand or a clay. और the relative amount, कितना sand है, कितना clay है, how much amount of sand is there, how much amount of clay is there, that will of course depend on the type of rock from which it is made. जिस टाइप का रॉक, जिस रॉक से वो बना है, डिपेंडिंग ऑन दैट द सॉइल विल बी आइदर इट विल बी सैंडी और इट विल बी क्ले. ओके, and so how we can define a soil? The mixture of rock particles and humus. What is soil? The mixture of these rock particles, जो clay होंगे, sand होगा, जो भी है, and along with the humus. This is called as the soil. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ सॉइल. सो दिस सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स, इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल. एक है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल मतलब क्या? जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सैंडी सॉइल. नाउ एज द सैंड पार्टिकल्स ऑफ कोर्स दे आर क्वाइट लार्ज, सो वो एक दूसरे दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देर इज़ अ वेरी लार्ज स्पेसेस इन बिटवीन देम. तो अगर लार्ज स्पेसेस है, सैंड के थ्रू वाटर कभी होल्ड होगा नहीं, द वाटर विल फ्लो अवे, इट विल गो. ओके, एंड सो the spaces are filled with air, it cannot hold the water. So sandy soil जो है वो light होती है, it is well aerated and it is always dry because it cannot hold the water.
देन क्लेई सॉइल होती है जिसमें द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल, इफ इट इज़ मोर, छोटे छोटे पार्टिकल अगर ज़्यादा है सॉइल में, दैट काइंड ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज दी क्लेई सॉइल. ओके, नाउ क्ले पार्टिकल जो होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, सो ऑफ कोर्स देर इज़ लेस अमाउंट ऑफ प्लेस इन बिटवीन, लेस अमाउंट ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन, एंड इट कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट टाइनी गैप्स. देन नेक्स्ट इज दी, of course it has less air but they are heavy and can hold more amount of water than the sandy soil. अब लोमी सॉइल जो है वो बिटवीन, मतलब सैंड भी होता है उसमें, क्ले भी होता है, तो बोथ द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मोटे देर आर लार्जर पार्टिकल्स, देर आर स्मॉलर पार्टिकल्स, सो ऑल द पार्टिकल्स आर मिक्सड, दैट इज कॉल्ड एज दी लोमी सॉइल. ओके, नाउ लोमी सॉइल जो होती है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, clay, and also another type of soil particle is present over there, that is known as the slit. What is that called? As the slit. And the slit occurs as the deposit in the river bed. If you see in the river bed there is the slit which is occur. Loamy soil is best soil for growing plant. Loamy soil is the best soil for growing plant because it can hold a good amount of water as it is needed by the plants. Okay, वी कैन स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग टाइप की सॉइल, उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप देना है, एंड यू सी विच सॉइल इट इज़, फॉर विच सॉइल इट इज़ वेरी इजी टू गिव द शेप. Depending on that we can study the property of soil. So this much for today, so just keep on studying, stay healthy and stay safe at your home. Goodbye.